थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है फिलहाल। तो लेट मी चेक थोड़ा से बाकी की चीज़ें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। Welcome to the YouTube live. I'm your host Dr. Mohan, and we are right now trying to cover a few of the things regarding NEET MDS, next dental PSC। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस सिंपल सा चिट चैट कर सकते हैं तो कर पाएंगे। शायद वॉइस आपको बहुत ज़्यादा सी रफ आ रही होगी बिकॉज विंडो इज ओपन, तो इसको उठा कर देता हूँ। तो विंडो बंद करने के बाद में थोड़ा सा अच्छा से आवाज़ आ जाती है। और ये शायद इसको मैं ऐसा ये कर दूँ तो भी ठीक रहेगा प्रॉबेबली। ओके, या इस साइड भी कर दूँ। इसके लिए मुझे ऑडियो लाइव प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज इतनी सारी सेटिंग उसमें नहीं करनी पड़ती, लाइटिंग वगैरह। सिंपली यू कैन स्ट्रीम लाइव ऑडियो राइट फ्रॉम एनीवेयर। बस साइलेंट है ये, बस बाकी चीज़ें as such they are not required। ओके, स्टिल इट्स नॉट वेरी गुड। शायद मैं ये चीज़ ये करके यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ओके, so it will look good right now। थोड़ी सी लाइट ऐसे आ रही है कि जैसे कोई दर्शन देता है कोई लाइट। ओके, तो पीछे वाली बैक पैक तो आप देख ही रहे हो। आई थिंक कि जब भी मैं ट्राई करता हूँ घूमना अर्ली मॉर्निंग जो भी कुछ लाइव होता है, तो वो पीकॉक की फेदर वाली बैग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो वेलकम। तो रिसेंट शायद हमने कुछ बुक्स कल ओरल टिश्यूज़ वो चीज़ें हमने स्टार्ट करी थी। वी आर गोइंग टू कवर द सेम थिंग। काफ़ी अच्छी बुक है वो रिगार्डिंग कंसेप्ट्स। लेट मी अगेन सिंपली जस्ट लाइक एडजस्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ, उसके बाद में वी कैन स्टार्ट। ओके, इट लुक्स गुड राइट नाउ। तो लगभग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 मंथ तो है हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन नीट MDS का। 31 जनवरी को जैसे एक्सपेक्टेड डेट थी, तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम। बूस्टर जैसे हमने बेसिक साइंसेस के और डेंटल साइंसेस के वी हैव कवर्ड इन अवर लाइव पॉडकास्ट। लाइव क्लास जो भी थे हमारे, दोज आर ऑल पब्लिश्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई कि एटलीस्ट वो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितना भी कुछ हम प्रिपरेशन कर पाए बूस्ट, तो दैट वाज द पर्पस। Then ceramics is another very important topic, let's say।
पानी मैंने रखा है ॲक्च्युली कॅटली में, गरम करून पिईल थोड्या वेळाने. कॉफी वगैरे तर इतक्यात बंद केली आहे इथे तयार करणं. मुंग्या बऱ्याच होतात, नंतर साफ करावं लागतं सगळं. एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली इन ऑर्डर टू चेक कि एक्टिव मेंबर्स है तो वो शायद पोल में. वो ऑप्शन दिखा मुझे. आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि उसमें क्या चीज़ें हैं. तो नेक्स्ट डेंटल पीएससी टारगेट रखते हैं फिलहाल. एंड द थिंग विच इज़ ऑलरेडी शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, डेंटल सर्जन ओपीएससी का एक क्वेश्चन पेपर था. उसका थोड़ा सा सिनॉप्सिस एक्सप्लेनेशन वी हैव शेयर, तो उसका ही सामने थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं. ओके, तो उसमें एमसीक्यू था शायद एक लाइक HLA, दैट इज अबाउट लाइक लेट्स से अ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन gene is a gene complex located on the chromosome 6, okay, that plays a key role in the immune system. Let me get my pen और डायरी, जो भी कुछ पेन मुझे मिल जाता है अभी. तो यूट्यूब लाइव के शायद हमने जो भी कुछ रिसेंटली कवर की थी चीज़ें, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था पेशेंट्स का प्रोस्तों में, वो चीज़ नोट डाउन करी थी हमने. बाकी की चीज़ें भी टुडे HLA जीन ऑन क्रोमोसोम 6. तो ये वाली काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट फैक्ट है. इस पर MCQ पूछा ही जाता है. क्रोमोसोम 6 particularly important होता है इसके रिगार्डिंग. सो दिस जीन HLA, it produces protein that help the body recognize the foreign substances, okay, such as bacteria, viruses, and they also initiate an immune response to fight off these type of infections. So HLA genes, these are highly variable with many different variants or alleles as well within the population, okay, and these variations can impact how well the immune system responds to an infection or to a transplanted tissue or organs, and it may be also associated with an increased susceptibility to certain autoimmune diseases as well, such as rheumatoid arthritis and multiple sclerosis. ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग ये HLA का कंसेप्ट है. और HLA टाइपिंग है, इट इज ऑफन परफॉर्म्ड प्रायर टू द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू हेल्प match the donors with the compatible recipients, and it is also used in the disease research and the forensic analysis. तो वो एक चीज़ थी कि HLA जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6. सो दिस इज द फर्स्ट MCQ फॉर टुडे यूट्यूब लाइव में, एंड इट्स अगेन फ्रॉम द PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है OPSC के, उससे ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है थोड़ा सा उसमें से. तो प्री फॉर्म्ड मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशंस के. दीज आर द मॉलिक्यूल्स सच एज हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन, ओके.
The second MCQ, we are just like going to look at histamine and serotonin. Okay. Uh, they are stored, these particular two things are stored in the specialized cells in the body, such as mast cells and platelets. Okay. And when these cells, that is mast and platelets, when these are activated by an immune response or even injury or any other stimuli, they release these preformed mediators into the surrounding. Okay. Then histamine, for example, it is released by the mast cell. तो ये MCQ आता है, PYQs में आता ही है. Histamine is related to the mast cells. Okay. And it also cause increased blood flow. First thing, swelling. Second, and redness at the site of the injury or infection. तो histamine क्या क्या चीज करता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, स्वेलिंग करा देता है वहाँ पे, एंड रेडनेस करता है एट द साइड ऑफ इंजुरी और इन्फेक्शन के साइड. While serotonin, which is released by the platelets, so a third MCQ, serotonin released by platelets. Simple fact, but it's very important. It can also contribute to the inflammation and blood vessel constriction. So serotonin especially blood vessel constriction में काम करता है. Okay. And other preformed mediators जो भी है इसमें, which can include heparin, which can prevent blood clots, help करती है उसमें, and cytokines as well, which are nothing but the signaling kind of thing, other immune cells जो होते हैं at the site of injury. तो फर्स्ट वाला HLA एंटीजन, क्रोमोसोम नंबर 6, सेकंड वाला एमसीक्यू हिस्टामाइन रिलीज्ड बाय द मस्ट सेल, थर्ड वाला सीरोटोनिन रिलीज बाय द प्लेटलेट्स, और उनके दोनों के फंक्शंस जो मीडिएटर होते हैं बेसिकली. एंड आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑप्सोनाइजेशन. जो चीज़ होती है वो एक चीज़ कर लेते हैं, पैथोलॉजी रिलेटेड है, थोड़ा सा फिजियो रिलेटेड. सो ऑप्सोनिन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड tag foreign particles such as bacteria and viruses, making them more recognizable to the immune system. Opsonins. So they work by binding to the surface of these particles in a process called opsonization, which facilitates their recognition and destruction as well by the immune cells such as macrophages and neutrophils. So opsonization. So the most well-known opsonin is immunoglobulin G, IgG, which is an antibody that binds to the pathogen, and it helps to activate immune cells as well. And a C-reactive protein, CRP, is another opsonin which is produced by the liver. Okay, the fourth wala MCQ, CRP, C-reactive protein, it is produced by liver, and it also relates to the it's opsonin. तो अच्छे खासा MCQ वी आर कवरिंग. ये शायद सेम चीज टेलीग्राम के चैनल पे भी वी आर गोइंग टू शेयर. होपफुली मेरी आवाज थोड़ी सी क्लियर आ रही होगी. Another concept है margination and chemotaxis, which are the two important processes in the immune responses that help to bring the immune cells to the sites of the inflammation, okay, or maybe infection. So margination क्या है and chemotaxis क्या है? So margination refers to the process by which white blood cells, also known as leukocytes, move from the center of the blood vessel to the edges, that is margin. So margination, okay. Margination is related to the movement of the WBCs from the center to the edges. Okay, so this allows them, that is WBCs, leukocytes, to come into contact with the inner lining of the blood vessels, where they can detect the signals of inflammation or infection, and they can also initiate the appropriate immune responses. So margination, simple सी चीज, related to the leukocytes. And what is chemotaxis? So it refers to a process by which immune cells are attracted to the area of inflammation or infection by the chemical signals known as chemokines. So as cells travel towards the site of the infection, that they follow a gradient of increasing
chemokine concentration, allowing them to reach to their destination quickly and efficiently. Okay. तो मार्जिनेशन डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड एमसीक्यू एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द लेट से वो एजेस की तरफ जाते हैं सेंटर से पेरीफेरी तक और कीमोटैक्सिस डिफरेंट लोकेशन से लेके डिफरेंट लोकेशन पे रह के वो एट द साइट ऑफ इंजरी मूवमेंट होती है and together this margination and the chemotaxis help to ensure the immune cells that are directed to the correct location within the body. Okay, so where they can mount an effective immune response against pathogens first and other foreign invaders also. Okay, then next is phagocytosis is the process by which cells called phagocytes engulf and ingest foreign particles such as bacteria or viruses, as well as damaged cells and debris within the body. And the phagocyte basically wraps itself the particle, forming a membrane-bound structure called as phagosome. And this phagosome then fuses with the lysosomes, which contain enzymes that break down the particle and destroy it. तो phagocytosis नेक्स्ट टॉपिक एमसीक्यू के लिए एंड उसमें इन्वॉल्व होती है फैगोसाइट्स फैगोजोम बट अलॉन्ग विद द लाइसोजोम के बिना वो पूरी चीज़ ये नहीं कर सकते. ओके, सो बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम. ओके, which is the body's first line of defense against any pathogens. So let's rewind something. What we have covered: HLA, histamine, serotonin, CRP, margination, and chemotaxis, and after that last वाला टॉपिक था phagocytosis. तो ये थोड़े से कंसेप्ट ज़्यादा हमने क्लियर नहीं बताए हैं, बट MCQ इस टॉपिक्स पे आता है तो सिंपली यू कैन transport culture media is a very good topic to read and revise. माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी हमने वो बूस्टर्स में पढ़ा है, बेसिक बूस्टर्स में सुना है उसके बारे में. सो व्हाट इज अ ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम. बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलरली मीडियम है and it is used to transport a clinical specimen such as swabs to the laboratory for the analysis. Okay, so this type of culture medium is designed to maintain the viability of the bacteria during transport, minimizing the risk of contamination as well or overgrowth by the other organisms. तो उसमें वो जो भी कुछ स्वैब है उसमें वो पर्टिकुलरली जो भी कुछ पैथोजन है या जो भी कुछ चीज़ है उसकी ओवर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेशन का रिस्क नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और लाइक ड्यूरिंग पर्टिकुलर टेस्टिंग, और वायबिलिटी भी वहाँ पे रहनी चाहिए. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कोविड में हमने बस वो जो वायल्स देखी थी RT-PCR की, दैट वाज अ सिंपल ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइक टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेके जहाँ तक आप टेस्ट के लिए उसको स्टोर या उसको यूज़ नहीं करते. तो उसके एग्जाम्पल, सो वन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया इज स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम विच कंटेन्स पेप्टोन्स, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम थायोग्लाइकोलेट. क्या क्या चीज़ है स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम में? पेप्टोन्स, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम थायोग्लाइकोलेट टू मेंटेन द बैक्टीरियल वायबिलिटी, जैसे हमने मेंशन किया ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. But it also sometimes contains charcoal which acts as an absorbent to remove the toxic substances that may be present in the sample. तो charcoal absorbent नहीं, वो adsorbent है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक है. तो Stewart's transport medium TCM, उसमें Stewart's एक है, उसमें क्या क्या कंटेंट है? सोडियम क्लोराइड, पेप्टोन्स एंड थायोग्लाइकोलेट. ये MCQ अच्छा खासा है इस पे. एंड अदर एग्जाम्पल इज कैल्शियम क्लोराइड भी कभी कभी इसका एक कंपोनेंट हो सकता है, और मे बी pH इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी एडेड टू हेल्प टू डिटेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ एज वेल. ओके,
अगेन माइक्रोबायोलॉजी का है नेक्स्ट शीक टेस्ट which is also known as diphtheria skin test, which is a diagnostic test used to determine whether someone has developed immunity to diphtheria, which is a bacterial infection that can cause severe respiratory problems and heart failure as well. So during this test, particularly a small amount of diphtheria toxin is injected. Okay, is injected into the skin of the forearm. If that person has been previously immunized against diphtheria or has been infected with the bacteria in the past, their immune system will produce antibodies that neutralizes the toxin and prevent the development of a red raised area around the injection site. So Sheik test है basically against diphtheria. If the person does not have immunity, they will surely develop a red raised area at the site injection site within 24 to 48 hours. Okay. And size of the reaction, basically वो जो जितनी पैच आएगा वहाँ पे, it can indicate the severity of the person's susceptibility as well to the diphtheria. So this Schick test is named after its inventor Bela Schick, who was a Hungarian pediatrician who developed the test in the early 20th century, and it is widely used as a screening tool for the diphtheria immunity prior to the development of the effective vaccines. Okay. So Schick test, next MCQ. Again, we are going to just like write. सात 8 points we have covered. Then we have Mantox. Okay, Mantox test भी एक अच्छी खासी है इसमें. So it is also known as the tuberculin skin test, TST. Okay, that is another name. TST, tuberculin skin test. It is a diagnostic test used to determine the लेट्स से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का कुछ अगर है प्रीवियसली कुछ चीज़ तो वो इसमें हेल्प करती है. एंड ड्यूरिंग दिस मंटॉक्स टेस्ट a small amount of purified protein derivative, that is PPD, which contains proteins from the tuberculous bacterium, is injected under the top layer of the skin on the forearm. Again इसकी भी जो टेस्ट है on the forearm है. Or after 48 to 72 hours, a healthcare provider will examine the injection site to look for any reaction such as redness, swelling, or hardness. So, a positive Mantox test indicates that a person has been infected with the TB bacterium at some point of their lifetime, but does not necessarily mean that they have an active TB disease. Okay. So, further testing such as chest X-ray or sputum culture, these are required to determine if the person has a current TB. Okay. So what we have covered, Schick test for the diphtheria, Mantox test also known as tuberculin skin test, and third wali we are going to cover a DIC test, DICK. So it is again a diagnostic test that it is used to determine whether someone has been infected with the bacteria that cause diphtheria. Okay. So severe throat, fever and swollen lymph nodes जो कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा I have to actually recheck that thing again. Bacillated dysentery का हमने कवर किया है. साल्मोनेला, शिगेला जो भी कुछ चीज़ था OPSC के पेपर में ही. Then sterilization is also important. asepsis जो भी कुछ है तो different forms of sterilization, chemical, physical, उसमें autoclave, moist heat, incineration, different mechanisms of that particular sterilization, उसकी इफेक्टिव लेवल, कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, ग्लासेस या समटाइम्स लेट से बाकी की चीज़ें आपको पता होती है कि वो चीज़ जो है
आपको उस पर एमसीक्यूज अच्छे खासे क्या हो जाते हैं, पूछे जाते हैं. तो लेट मी जस्ट लाइक डू वन थिंग. थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर होगा, ताकि मैं दूर भी जाऊंगा तो आपको आवाज़ अच्छी तरह से आ पाएगी. Almost 25 minutes have been there. We are just like having that particular thing. So glutaraldehyde sterilization is a method. It is a chemical sterilization that involves using a solution for the glutaraldehyde. Solution होता है वो simply. तो to disinfect uh, and sterilize the medical equipments and instruments. So it's a powerful disinfectant and sterilizing agent that is effective against a wide range of microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, and spores. So to use glutaraldehyde for sterilization, the equipment of the instruments are first cleaned, disinfected, and then immersed into a solution of glutaraldehyde for a specific period of time. So the exact time and the concentration of the solution will depend on the type of the equipment being sterilized and the manufacturer's instructions. काफ़ी अच्छी है, but it's also very toxic and irritating to the skin and mucosal membranes. So proper safety precaution must be taken when handling and using these chemicals, like use of protective gloves, glasses, mask. It's also very important. Then next we have Paul Bunel or Banel, whatever like you can call. पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ गर्म करके, बैटरी है तो. सो डिक टेस्ट, टीएसटी टेस्ट, मंटॉक्स टेस्ट, उसके बाद में पॉल बुनेल टेस्ट, पॉल बुनेल बनेल, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट एज. सेम तो रहने वाले वो चेंज नहीं होगा. So let's get back. So Paul Bunnell test, also known as monospot test, monospot. Okay. इतके सगळे पेन्स आहेत ना, अवघड होतं पेन करेक्ट करायला. तो मोनोस्पॉट टेस्ट. That was the 11th topic, 11th MCQ. So it is a diagnostic blood test used to detect the presence of antibodies to the Epstein-Barr virus, which causes infectious mononucleosis. Okay. So this test involves mixing the patient's blood sample with sheep red blood cells that have been coated with a specific antigen from the Epstein-Barr virus. And if the patient has been infected with the virus already, their antibodies will react with the antigen on the sheep red blood cells, causing them to clump together and form agglutinates. So it's a very simple test, inexpensive way to diagnose infectious mononucleosis, but it can also produce false negative results during the early stages of the infection. So additional testing is required and it is necessary to confirm the diagnosis. Okay. एमसीक्यू आता है, पॉल बनेल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ओके. और द वायरस दैट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड. तो उसके बाद में वी आर गोइंग टू कवर सम थिंग्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिकली, जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है बैक्टीरिया और उस चीज़ के लिए.
पानी पीने के बाद में इट लुक्स वेरी गुड. गरम पाणी पोटामध्ये टाकलं तर चांगलं वाटतं असेल. लेट्स चेक इच एंड एवरीथिंग. बाकीची चीजें भी. So transformation. Okay, we are just like going to start with that. Okay. So it is the process by which a bacterial cell takes up DNA from the environment and incorporates it into its own genome. So transformation is a natural process that occurs in some bacteria. So transformation is a process by which a bacterial cell takes up a DNA from the environment and it incorporates into its own genome. So it's a very natural process. Okay. While transduction, second thing, so it is a process by which bacteriophages, that is viruses that infect bacteria, they transfer the genetic material from the one bacterium to the other. So during this transduction, the bacteriophage infects a bacterium and introduces its own DNA into the host cell. So the viral DNA may integrate into host genome where it can be replicated along with the host DNA. तो चोरी छुपे ही जैसे उसको भेज दिया जाता है उसके पास में, रेप्लिकेट करने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम करेंगे, किसी दूसरे को दे देंगे, वो जेरॉक्स कॉपीज निकालते रहेगा. सो ट्रांसडक्शन इज ऑल अबाउट दैट. छुपा रुस्तम जिसे कहा जाता है. एंड कंजुगेशन, सो थर्ड वाला, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ बैक्टीरियल सेल एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. ओके. सो ड्यूरिंग conjugation, two bacterial cells form a temporary bridge called as conjugation bridge through which they exchange plasmids or any other genetic material element. So these plasmids are small circular pieces of DNA that replicate independently on the back of the bacterial chromosomes. So transformation, transduction and conjugations, plasmids इसमें से किस चीज में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द क्वेश्चन. सो ट्रांसडक्शन में आ जाता है वो बैक्टीरियोफेजेस. सो स्टेनिंग के रिलेटेड भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं. तो प्राइमरी स्टेन जो होती है ग्राम स्टेन, it is crystal violet, and this stain is applied to the bacterial cells on the slide and which are then fixed with the heat. So crystal violet, which basically binds to the peptidoglycan layer of the bacterial cell wall, giving the cells a purple color. So after staining, the slide is rinsed with the decolorizing agent such as alcohol and acetone, which removes the stain from the some bacteria but not others. तो एक बेसिक चीज़ कि क्रिस्टल वायलेट ग्राम स्टेन वो पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर के अटैच होती है. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एमसीक्यू. और दूसरी चीज़ है डीकलराइजिंग एजेंट अल्कोहल एंड एसीटोन, दैट इज ऑल्सो यूज इन द ग्राम स्टेनिंग. तो बेसिकली डिफरेंट डीकलराइज बैक्टीरिया होते हैं, यूजुअली रेड होते हैं, और ग्राम पॉजिटिव वन है जो भी, तो वो स्टिल पर्पल रहती है क्रिस्टल वायलेट की वजह से. So this allows for the differentiation between gram positive and gram negative bacteria, but under a microscope. Okay. So anybody who's actually just interested in these things, you can kindly simply visit our website www.dentalexams.in. वहाँ पे बाकी सभी चीज़ें, रिसोर्सेस, लाइव क्लासेस की लिंक्स, एंडोडोंटिक एनहांसमेंट कोर्सेस, प्रोस्टोस की लिंक, सभी चीज़ें वहाँ पे वी हैव एक्चुअली शेयर्ड. सो काइंडली डू चेक आवर वेबसाइट. डिस्क्रिप्शन पे भी उसकी लिंक दी गई है. एंड व्हाट्सअप का नंबर इसके लिए शेयर किया गया है कि इफ़ एनीथिंग यू आर जस्ट लाइक लुकिंग एट कि आपको अपडेट्स मिल भी गई है, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर टू द अदर कम्युनिटी मेम्बर्स, काइंडली डू व्हाट्सअप. और टेलीग्राम चैनल पे विद क्रेडिट आपका नाम उसमें मेंशन किया जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक शेयरिंग.
गुलाबी साडी खूप चाललं मधामधामध्ये खूप गाणं. वाईब त्याची थोडीशी चांगली होती. साड साड्या, गुलाबी साड्या. So this is the first part. We will try to just like end it right now. उसके बाद में धीरे से हम जल्दी आ जाते हैं. Okay.